ये जो स्टूडेंट का जो रिलेशन है ना, वो एक बहुत एडमिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्या क्या एडमिक्सचर है देखो, उसमें एक रेस्पेक्ट का जगह भी है, उसमें एक बॉन्डिंग का जगह भी है, उसमें एक दोस्ती का जगह भी है, सब कुछ। ऐसा नहीं है कि टीचर मतलब वो पहले के दिनों के जो टीचर्स आते थे, हाँ डंडा लेके झोला लेके बैग डाले थे, अभी जो हम लोग टीचर्स हैं वो काफी फ्रेंडली है स्टूडेंट के साथ। तो ये दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोस्ती दोस्ती की जगह है, ऑलवेज फ्रेंडली भी। तो एक बेसिक जगह ऑफ रिस्पेक्ट हमेशा टीचर को देना। वो आप लोग देते हो, मैं नहीं बोल रही कि आप लोग नहीं देते हो, वो हमेशा देना चाहिए। वो टीचर आपसे 2 साल बड़े हो तब भी देना चाहिए, 5 साल बड़े हो तब भी देना चाहिए, अगर 15 साल बड़े हो तब भी देना चाहिए। मैडम तो ऑटो से बोल रहा बस एनीवेज वहाँ और यहाँ में थोड़ा सा डिफरेंस तो इसको हमेशा याद रखना। जो भी बोलते हो, जो भी करते हो, बात बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है, बट वो दायरा याद रखना कि कभी आप किसी टीचर को एक सेंटिमेंट्स को कभी। सेकंड थिंग, ये जो आप लोग एफर्ट देते हैं टीचर्स डे में, मुझे अच्छा लगता है। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई स्कूल में 1 घंटे पहले पहुंच जाना, बड़ी लगाओ बोर्ड पे हैप्पी टीचर्स डे क्रिएटिविटी डाल के पूरा लिखो। that entire thing we used to do before the teacher used to enter, बहुत अच्छा लगता था। We used to put a ribbon on the door, teacher again, all those things we used to do। तो आज के दिन में मुझे अपना बचपन याद आता है, my student days when I used to do those things, make my card for the teacher, the favorite teacher के लिए तो कुछ special रहता था। So all these things, but this is the time you people will always miss in life। ये जो भी student days है ना, यहाँ बैठ के क्लास करते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाओगे, वहीं तक लाइफ का सबसे सुंदर फेज है। उसके बाद से when you go you have become mature। जितना ज्यादा mature हो जाओगे ना, उतना ज्यादा लगेगा कि लाइफ जो है बहुत बोरिंग, जानने के लिए कुछ नहीं है, अचीव करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। तो एक तरफ से ठीक है, अभी लग रहा है कब मेडिकल होगा, कब डॉक्टर बन जाएंगे, कब नौकरी करेंगे, कब सैलरी आएगा। once you reach that mark, no, you always want to look down, वहाँ से और ऊपर देखने का मन नहीं करता। तो ये जो आपका टाइम है आपके लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम। तो पढ़ाई करने तो आई ऑलवेज से, बट उसके साथ साथ लाइफ को हमेशा एक रनिंग चलता है। ऑलवेज एंजॉय योर लाइफ, गो आउट विद फ्रेंड्स, वॉच अ क्रिकेट मैच, प्ले पबजी, व्हाटएवर। हाँ, पर दिमाग में वो भी रखना, ऑल योर फन एंड ऑल योर एवरीथिंग विल स्टे इन इट्स प्लेस ओनली इफ यू कैन एस्टैब्लिश इन योर करियर। वो एस्टैब्लिशमेंट जरूरी नहीं है कि सबको मेडिकली पढ़िए, सबको डॉक्टर। एस्टैब्लिशमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, that establishment which gives you a peace, when you feel content that yes, I am doing what I want to do in life, that's the eternal bliss and peace that you get. And I used to share a very friendly relation with all my teachers. I used to be very naughty kid, not a very shanto, goody first bench kind of. I used to be very notorious. I used to always sit in the last bench. Hey, Mathama, Silvi, Mathama. Hey, Silvi, Mathama. एक्टिवेटेड हो जाता, जो भी सारे साल में पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ भी करेंगे, एग्जाम के पहले सेल्फ सिग्नलिंग एक्टिवेट होता है कि नहीं, पढ़ाई करेंगे। ये करते 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 बचपन भी। अब जब आते हैं, यू पीपल आर लाइक मिरर्स, तुम लोगों को देख के अपना बचपन अब। This is why I came into this profession, because in this profession I somehow indirectly get to rewind my childhood। कि ऐसे तो आप बचपन में वापस नहीं लौट सकते ना, टाइम मशीन तो नहीं है, बैटरी ले चले। उन लोगों को देख के बचपन याद आ गया। थिंक दैट यू पीपल डू नो कि आगे देना है, सब मिलके डिस्कस करेंगे, ये करेंगे, हम लोग भी करते हैं, या साथ में पढ़ाई करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, Group study. So all these things are just like good little memories of childhood। और बाकी जो सारे टीचर्स बोलते हैं, any teacher, दुनिया का कोई भी टीचर आपको कितना भी डांटे, कितना भी कुछ करे, हमेशा याद रखना, कभी किसी टीचर का टारगेट नहीं होता है किसी स्टूडेंट का बुरा करना या आपको हर्ट करना, कभी किसी का टारगेट नहीं। एवरी टीचर फील्स वेरी कंटेंट। कोई भी टीचर हो, कल आप जाके एक नर्सरी के बच्चे को पढ़ाएंगे ना, आपको सेम फीलिंग आएगी। एनी टीचर तो सबसे ज्यादा खुश तब फील होता है when the student is doing good in life। I won't say good in medical, I would rather say good in life। So whenever you people do good in life, no, I always feel impressed wherever I am। When you're not in contact with me, some fine day you bump into my face,
अपने वाले के पढ़ाते so that feeling is a very different feeling which when you teach someone you'll understand कि वो सबसे अच्छा feeling है and कभी भी किसी टीचर का याद रखना टारगेट किसी स्टूडेंट का खराब करना नहीं all of us always try to do our best so that you people reach where you want to be हमेशा टारगेट because this is one thing which is something more beyond a profession. After all, we are professional. सब काम ही करते हैं. आप पेंटर बनोगे तो भी आपका profession है. आप क्रिकेटर बनोगे तो वहाँ पे भी एक profession करेगा. But this is something I believe which is a little bit more beyond profession. It is sort of bonding. ये bonding आपको याद रहेगा जब आप आकाश छोड़ के जाओगे ना आपको याद आएगा. अच्छा, I am.